Hi, good afternoon, everyone. Let's quickly deep dive into the five healthcare stocks where you can put $200 each and total of $1,000 over the next 3 years and expect to double down and become $2,000 over the next 3 years. Five stocks which you could see on the screen. सबसे पहले समझते हैं इनका resilience कैसे समझेंगे, how they have performed during various crises which have happened in the past. If you see during the dot-com bubble, during the financial crisis, during the COVID crisis, I have listed down that how they have managed to be a little better than S&P 500. मतलब उतना नहीं गिरे जितना बाकी indexes and बाकी चीजें affect हुई थी. So they have been resilient in nature. So these are your defensive bets. Now I would like to quickly deep dive into Pfizer stock कि उसमें कैसे resilience आई थी. I've chosen example of Pfizer where you see in the dot-com bubble also it dipped a bit then recovered. Of course, the stock was in a downward movement. The entire movement was downward throughout the years. But if you see during 2008 crisis as well, it fell down by 40%, which is still lesser than what happened to S&P 500. Then if we, boil down the attention to COVID crisis, nothing happened to Pfizer again. So this is just I would say representation of trying to show what happened in these stocks during different financial crises. I'll also show an example of Eli Lilly. Now for Eli Lilly, if you see during the dot-com bubble, it fell to 38 levels from $50. It still wasn't as significant as S&P. And if we, vouch our attention to the 2008 crisis, again, it fell by close to 40% or so, whereas the fall in S&P was more than 50%. We have also, taken example of March when it did not fall much at all. So these are all defensive stocks. I took two examples for you. Now let's quickly deep dive into stock specific analysis. सबसे पहले उठाएंगे Novo Nordisk जहां पे मैं डालना चाहूंगा $200. So this is our obesity powerhouse and मुझे कहना चाहिए हमारा diversification play भी है. I know the stock is on everyone's lips because currently एक market leader बना हुआ है, massive demand for its GLP-1 drugs, Ozempic and Wegovy हर एक के नाम पे है आजकल. तो बट हमें ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज नेक्स्ट इन पाइपलाइन फॉर नोवो नॉर्डिस्क. इट इज नॉट जस्ट GLP-1 थिंग्स, सो इट इज ऑल्सो इनटू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड इमर्जिंग थेरेपी एरियाज, सीरियस लिवर कंडीशंस इफ यू कुड सी. एंड आप थोड़ा बहुत उसके क्लिनिकल ट्रायल्स देखोगे तो एक ड्रग है जेड के नाम से, यू कुड सी ऑन द स्क्रीन. उस पे ट्रायल्स चल रहे हैं. वंस इट कम्स आउट आई थिंक इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर इट. सिमिलरली इट्स वर्किंग ऑन रेयर डिजीजेस एंड अदर नेक्स्ट जनरेशन मेटाबॉलिक ड्रग्स. Now we come to Eli Lilly. Eli Lilly मेरा favorite stock है because this is a stock that is actually giving Novo Nordisk sleepless nights and इसका primary rival है because of its dual action therapy Mounjaro and Zepbound जो competition दे रहे हैं Novo Nordisk को. अब thesis simple है. आप data points अगर देखो numbers के साथ, Novo Nordisk वेट लॉस लेके आया है 15% का, एली लिली कहता है 21%. ये ट्रायल्स के रिजल्ट्स हैं एंड अदर डेटा पॉइंट्स एज वेल. सो इट इज एक्सपेक्टेड कि अब नया लीडर एली लिली होगा एंड इस वेट लॉस कैटेगरी में इट शुड इमर्ज आउट एज द लीडर. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग हमें समझनी जरूरी है एल्जाइमर रिलेटेड कि एल लिली सिर्फ और सिर्फ ओबेसिटी पे फोकस नहीं कर रहा है. उसका एक ड्रग है कि किसुनला KISUNLA जो आपको अल्जीमर प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा. एंड अभी ये ट्रायल फेज में है, कुछ जगह पे इसके वायल्स यूज भी किए जा रहे हैं. इफ इट कम्स आउट इट कैन बी अ हाई ग्रोथ पिक आई वुड से फॉर एल लिली एंड मैसिव इसमें पैसा आ सकता है. जितना पैसा इसने कमाया है ड्रग ओबेसिटी वाली ड्रग से वो ये यहाँ पे लगा रहा है. एज यू कुड सी द मैनेजमेंट इज इटसेल्फ टॉकिंग अबाउट इट. ओके, थर्ड हम आते हैं मर्क पे. अब मर्क जो है वो एक ऑन्कोलॉजी का बादशाह टू बी ऑनेस्ट एंड दैट्स व्हाई दे से इट इज द पावर हाउस. इसकी एक ड्रग है KEYTRUDA. प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए. बट कीट्रूडा वो उसका 30 बिलियन सेल्स लेके आई है लास्ट ईयर इटसेल्फ. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें इसमें इन्वेस्ट करते हुए समझने की जरूरत है कि 2028 में इसके पेटेंट एक्सपायर हो रहा है. बट मर्क इज टेकिंग एक्शंस टू इंश्योर कि उसका 50% लॉस हो सकता है ऑफकोर्स रेवेन्यू अगर उसका पेटेंट एक्सपायर होगा. तो वो क्या कर रहा है, एक एक्सटेंशन ड्रग लेके आ रहा है इसका, जिसको इसने बोला है सबक्यूटेनियस कीट्रूडा. एंड
इससे इंश्योर कर रहा है कि जो लॉस होना था मार्केट शेयर में वो मैं कैप्चर कर लूंगा इस सबक्यूटेनियस कीट्रूडा से. Or it has further pipeline also in progress, which are non-oncology things, which you could see on the screen. Now we get into AstraZeneca. Before I speak anything, I'll let you listen one-liner statement by Trump himself. AstraZeneca, the largest pharmaceutical manufacturer in the United Kingdom, is committing to offer Americans major discounts on their vast catalog of prescription drugs. One of the great companies, by the way. Okay, so AstraZeneca, as you heard from Trump itself, it is trying to push across globally, not just US. And सबसे important है इसके 3 distinct pillars: oncology, rare diseases and biopharmaceuticals. I know oncology again इसका एक revenue giant है या engine है जो 43% revenue लेके आता है because of the ADCs which it has in its portfolio. But इसका रेयर डिजीजेस पे भी फोकस है. एंड इफ यू सी इसने एक्विजिशन की है टू इंश्योर इट हैज अ कंसिस्टेंट हाई मार्जिन रेवेन्यू कमिंग इन फ्रॉम दिस रेयर डिजीज पोर्टफोलियो एज वेल. So now we come to the last but the most interesting one, which is the Pfizer. Pfizer का ध्यान सबके दिमाग में आता है when we hear about it is during the COVID crisis. But after COVID crisis, I know it has fallen a lot. It is a very good value player which we have, and with its acquisition, जो Seagen का इसका acquisition हुआ है to focus on cancer specific, I would say, disease, तो उससे there is a lot in potential and 10 billion की एक pipeline they want to build. And I know this acquisition happened in 2023, so it will take some time for it to build upon it and वो actual numbers में दिखना शुरू होगा. So these are the 5 players I wanted to cover where you can put your $200 each and expect it to give you good returns over the next 3 years. Share and subscribe if you like the video. Thank you.